कल का सबको समझ आया था? अश्वित एंड तन्मय? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये ट्राई कीजिए। आई एम गिविंग यू 2 minutes। क्वेश्चन आया क्या समझ में? प्लीज रिस्पॉन्स विद येस और नो। ओके, आई गिव यू सम स्टेप्स। सी, हमें डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। x इक्वल्स टू अल्फा टी क्यूब एंड y इक्वल्स टू बीटा टी क्यूब, and we have to find the value of speed. ओके, तो डिस्टेंस टाइम की के रिलेशन से हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि स्पीड जो होती है वो डिफरेंशिएशन होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो x का x और t का हम अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें स्पीड का x कंपोनेंट मिल जाएगा। वी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी एंड वी वाई विल बी dy by dt। Okay, Arnav has also joined right now. So Arnav, I'm giving you 1 minute। आप एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बाकी सब भी मैंने ये जो यहाँ तक सॉल्व किया है इसके आगे ट्राई करके देखिए। आया किसी का आंसर? सी, वी एक्स हो जाएगा अल्फा इंटू 3t² एंड वी वाई विल बी बीटा इंटू 3t²। राइट, तो हमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मिल गए हैं। इसका हमको रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जो हो जाएगा अंडर रूट
अल्फा स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर का स्क्वायर। 3t स्क्वायर का स्क्वायर इसमें से कॉमन आ जाएगा बाहर, दैट विल बिकम 3t स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो दिस इज ऑप्शन बी। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी को डाउट है इसमें? No one? Okay. Let's move on to next question. Okay guys, I'm giving you 1 minute to solve this question. क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो बता देना। Is the answer D? No. It's B. और किस किस का डी आ रहा है? B, B. B. Yes, B is the right answer. Okay, Parthiv is also joined right now. Parthiv, I have given 1 minute to solve this question. इसको अटेम्प्ट ओके करके सर। देखो। हाँ सर। B. B. Yes, B is the answer. Okay, so let's solve this question. See, इसमें एक सिंपल सी चीज़ ये करनी है, ब्लॉक के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ जी, हम सिंपली इसका कंपोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास 1D मोशन बन जाएगा। तो ये कितना एंगल आएगा ये? दिस इज 30 डिग्रीज, सो दिस विल बी 60 डिग्रीज। तो ये जो ब्लॉक है ये इनिशियली रेस्ट पे है, u इक्वल्स टू 0, और एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा g cos 60। g cos 60 कितना हो जाएगा? cos 60 इज 1/2। राइट गाइस? Or we can use mg sin theta also, right? हाँ हाँ, साइन थीटा, हाँ साइन 30 कर लो या cos 60 कर लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। Yeah. So we have u, we have acceleration, and we have the distance. Okay, we have, okay, right. We have the distance. Distance is distance is given to us 9.8 meters, and we have to find the time. तो कौन सी इक्वेशन लग सकती है इसमें? S equals to ut plus half at square, right? u तो 0 है तो ये हट जाएगा, so we have 9.8 equals to half, a की जगह आ जाएगा g/2 इंटू टी स्क्वायर। g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे,
सबको समझ में आ रहा है ये? Yeah. Great. T square equals to 4. That gives us t equals to 2 seconds. किसी को डाउट हो तो पूछ लो. No one? Okay. Yeah. Let's move on to the next question. I'm giving you 1 minute to solve this. Okay. किस किस को क्वेश्चन समझ में आ गया? प्लीज रिस्पॉन्ड विद अ यस. Yes. ओके, बाकी लोगों को Yes, समझ sir. में नहीं आया? Yes, sir. See, I'll just explain the question. See, there's a particle. This particle has traveled 10 meters in the first 5 seconds. See, this 5 seconds is from here to here. Okay, and in next 3 seconds it has traveled 10 meters. This is 3 seconds. And it is asked what is the distance traveled in next 2 seconds. That is, we don't know this distance, and it is given this time is 2 seconds. Now we have the equations for time, distance, acceleration and these things. But यहाँ पे सी इसमें दो अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज हम पहले पार्ट के लिए सॉल्व करके यहाँ की फाइनल वेलोसिटी निकालें. फिर ये B. फाइनल वेलोसिटी. हाँ, B. क्या आ रहा है आपका? B. No, the answer is A. ओके, सो ये फाइनल वेलोसिटी को हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेके फिर कंसिडर कर लेंगे, या फिर और इसका शॉर्ट मेथड है कि पहले इस केस को कंसिडर करेंगे फिर इस पूरे केस को कंसिडर कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हम क्या इक्वेशंस यूज कर सकते हैं? देयर इज X सम is equal इनिशियल to UT वेलोसिटी plus u. half AT square. Yes, right. Distance is given to us 10. S equals to u. There is some t which is 5 plus half a and t square. Clear? Second part we will again take the same u and the distance will become 20. S equals to u and time will become 5 plus 3, that is 8. So ut plus half a t square. Okay, so here we have two equations in two variables. तो ये solve हो जाएगा ये. Hmm. We have 10 equals to 5u plus
25a by 2 and 20 equals to 8u plus 64a by 2. ओके, सो ये ट्राई करके देखो, सॉल्व करके क्या आ रही वैल्यूज यू और ए की। फर्स्ट इक्वेशन को इंटू टू कर सकते हैं ना? इंटू टू कर सकते हैं बट उसका सेंस नहीं है, इंटू टू करके क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा बस। बट हम हम्म। किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे या तो u कैंसिल आउट हो जाए या फिर a कैंसिल आउट हो जाए। हम्म। ओके, सो मे बी अगर तुम इस अप्रोच से करना चाहते हो तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा कर सकते हो। एंड देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके u कैंसिल आउट हो जाएगा। या दैट कैन बी अप्रोच। सी पहले तो आई वुड सजेस्ट इसको 8 और 5 से भी नहीं, इसको आप पहले कैंसिल आउट कर लो। दिस विल बिकम 2 इक्वल्स टू u प्लस 5a बाई 2 एंड ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बिकम 5 इक्वल्स टू 2u प्लस 16a by 2 and this will become 8a. अभी और इजीली हो जाएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो हम्म। तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2u प्लस 5a and we have 5 equals to 2u plus 8a. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we will get 1 equals to 3a and a equals to 1 by 3, 1 by 3 meters per second square. And then substitute this in any of these equations, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो भले ही। दैट विल गिव अस 4 इक्वल्स टू 2u प्लस 5 बाय 3, 2u इक्वल्स टू 4 minus 5 by 3 equals to 7 by 3. So that gives us u as 7 by 6 meters per second. Okay, we have the u, we have the a, and we have to find distance traveled in the last 2 seconds. अब क्या करेंगे इसके आगे? Does anyone have any idea? Okay, I'm giving you 1 more minute. इसके आगे करके देखो। सर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना? हाँ, एग्जैक्टली exactly. करके देखो क्या आ रहा है आंसर। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस भी कर सकते हैं ना? वो हम नहीं करेंगे क्योंकि हाँ हाँ इसमें हाँ, वो फाइनल नहीं। वेलोसिटी से लेना देना नहीं है। हाँ 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 हाँ।
Okay, let's move ahead in this question. We have S equals to ut plus half at square. Okay, and we'll take the complete scene over here. That is, S will become, just a second, will be S equals to 7 by 6 into time. Now, what will be that time? Time will be 5 plus 3 plus 2, that is 10. T plus half, acceleration is 1 by 3 and 10 square. ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. इस टोटल में से हम 20 माइनस कर देंगे. So that will give us the distance in the last 2 seconds. Okay. Let's move on to the next question. इसमें डाउट है किसी को? नहीं. All right. I'm giving you 2 minutes to solve this question. आया किसी का? Almost 1 second. इसमें relative velocity का concept है ना? रिलेटिव से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है. Relative is usually used when we have both in some acceleration or both in velocity. बट यहाँ पे एक एक्सेलरेशन में है, एक वेलोसिटी में है. So I think you should consider solving both of these separately. Is the answer B? No. DB. D for Delhi is the answer. Oh. Okay. I'll solve a few steps for you. See, पहले एक डायग्राम से समझ लेते हैं क्वेश्चन में हो क्या रहा है. Okay, there is a bus. This has started moving. See, begins to move लिखा है, that means u was 0. And acceleration is given 1 in this direction. Now there is a man 48 meters behind. Right? He starts running with a constant velocity 10 to catch the bus. Now we have to find कि कुछ डिस्टेंस आगे जाके दोनों मिल जाएंगे. तो ये कितने टाइम बाद होगा? We have to find this. क्वेश्चन आया समझ में सबको? यस सर. ओके. तो क्या करेंगे हम? पहले बस की इक्वेशन लिख लेंगे. बस की इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे? वी हैव u, a एंड t.
And we have, what can we take? Distance. Let us take some distance. कि ये कुछ s डिस्टेंस पे ये इवेंट हुआ. सो ऐसा लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. Yeah. मान लो इस पॉइंट के लिए हम निकाल रहे हैं. सो s equals to u is 0, so this will become 0. We have half, a is given 1, and we don't have t, so t square, that is s equals to t square by 2. ओके, ये बस के लिए हो गया. अब for this person we have a constant velocity, so we can simply take speed equals to distance upon time. Yeah. Speed equals to distance upon time. Now what is the distance? Distance is 48 plus s. Okay, and time, we don't know the time. U is 10, so 10 equals to 48 plus s upon t. S we have over here t square by 2, so we'll just substitute it over here, whole upon t. इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा. T square by 2, that is t square plus 96 minus 20t equals to 0. So we have a quadratic over here. Quadratic solve हो जाएगी. सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है आंसर. Tw- 12 and 8. 12 and 8, that's right. We'll get t is equals to 12 and 8. अब 8 सेकेंड्स पे जब ये बस से मिल जाएगा तो हम 12 तो कंसिडर करेंगे नहीं. So our answer will be 8 seconds. आया सबको समझ में? Shall we move on to the next question? Yes, sir. Yeah. Okay. Did everyone understand the question? Yeah. See, there's a tower, and from this point, a body is thrown upwards with some initial velocity v naught, and at the same time,
a body is thrown downwards, the same in initial velocity v naught. And after some time t, suppose ये बॉडी यहाँ आ जाती है and ये बॉडी कुछ यहाँ आ जाती है, we have to find the distance between these two. Hmm. आया किसी का आंसर? Shall I start solving or does someone need more time? One more minute. Okay. All right, let us start Is the solving. answer C? No, It's A. no, it's not A as well. It is B. See, we'll use the equation. Which one? S equals to ut plus half at square. Okay, why are we using this equation? Because distance is asked. So we have s, initial velocity is given. So we have u, and time t is given. So we have time t, and acceleration, we know acceleration will be g. So we can use this equation. So for the first body, we'll use this equation. S1, let's call this first. So S1 equals to U is V naught into time t. Now gravity is acting in the downwards direction, but this body is moving upwards. So we'll take this as minus g. So it will become minus half gt square. And for the second body, distance will be ut plus half gt square. Because this is moving downwards and gravity is also acting downwards. So this is S1 and this is S2. So distance between both of them will be S1 plus S2. So S1 plus S2 minus half gt square से plus half gt square cancel out हो जाएगा, and finally we'll have 2v naught into t. So B is the answer. Sir, even I got B. Okay, nice. और किसी का आया था B? Relative velocity भी solve हो जाएगा. किससे? Relative velocity. हाँ हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हैं, right? Because both of them are having similar situations, but directions इनकी different है, so acceleration will change. That's right, okay. आगे सब कुछ समझ में ही वाला? Yeah. Shall we move on to the next one? Hmm. Okay.
Has everyone understood the question? Yes, sir. See, we have two situations over here. In the first situation, a body is thrown upwards. Is the answer B? D. No. Answer B, is B, B. B. I said B. Yes. Yes, Bombay. yes, yes. Delhi. No. Bombay, Bombay. Bombay. Yes. B for Bombay is the answer. That's right. Okay. In the first situation, the body is thrown with some velocity. Let us take the velocity as u, and it reaches a maximum height of 50 meters. Right. Now reaching the maximum height means the final velocity has become zero. So we have over here u with us, some final velocity zero, and the distance between them. Okay, in the second situation, what have they done? They have doubled the mass, but we know कि mass से कुछ इसका relation नहीं होता. It is independent of mass, so that But will like not if be. you're increasing the mass, ज्यादा oppose होगा ना फिर. नहीं नहीं नहीं. We consider all of these situations in vacuum. अच्छा, oh, okay, got it. Yes, we do not consider air resistance in this. Hmm. Okay, so doubling the mass will not affect this. Doubling the initial velocity. So in second situation we have 2u and maximum height पूछा है, so final velocity will again be zero, and they have asked what will be the distance. So we have a very short approach for this. See, equation हम use कर लेंगे, use v square equals to u square plus 2as. क्यों यूज कर रहे हैं? आपको समझ में आ गया होगा अभी तक जो मैंने चीजें लिखी, कि वी हैव ऑल ऑफ दीज गिवन, एंड ग्रेविटी तो है ही acting downward, so we have the acceleration as well. So 0 equals to u square, and g is acting downwards, so it will be negative minus 2g and h. So u square becomes 2gh. That shows us that h is proportional to u square. That means u का जो चेंज होगा उसके स्क्वायर जैसा चेंज आएगा h में. So here we have doubled the initial velocity, तो h क्या हो जाएगा? 4 times हो जाएगा. This is a short approach. इसमें हमें सब कुछ solve नहीं करना पड़ेगा. H will become 4 times. That will give us 50 into 4. That is 200 meters. ये आया समझ में सबको? Basically 2u square कर दिया. What? I didn't get you. आपने 2u square किया. U क्यों स्क्वायर किया? क्योंकि see, this is our equation, v square equals to u square plus 2as, Hmm. and we have just interpreted from this equation that what is the relation between initial velocity and the distance. Yeah. Okay, because we have final velocity 0 is confirmed, acceleration is constant, so we are seeing कि अगर हम u में कुछ भी change करते हैं तो उसका s पे क्या relation पड़ता है. So Hmm. that we have found out in this. H is proportional to u square. Oh, got it. Okay. फिर यहाँ से हमने देखा कि u को क्या कर रहे हैं, u को डबल किया है. So u की जगह आप 2u रखोगे, so that will give us 4 times u square, and u square is h, so that will give us 4h. ऐसे भी देख सकते हो इसको. Hmm. And we have the orthodox method as well. उससे आप सब कर ही लेंगे. दैट इज उस केस में क्या करते हम u कैलकुलेट कर लेते पहले कि कितना u के लिए 50 meters अचीव होगी हाइट, एंड देन वी वुड डबल इट एंड देन वी वुड सॉल्व इट अगेन.
राइट गाइस, आगे सबको समझ में? Yeah. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Is it C? नो. B. यस, बी इज द आंसर. Acceleration क्यों नहीं? क्योंकि एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी है जो डाउनवर्ड्स ही रहेगी हमेशा. अच्छा हाँ, but when it's bouncing तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा फिर तो उसमें भी तो एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होगा ना फिर. नहीं नहीं नहीं, एक्सेलरेशन तो फिर भी डाउनवर्ड्स ही हो रहा है ना. सी, बिकॉज बॉल अगर ऊपर भी अगर जा रही है तो इसकी स्पीड रिड्यूस होते जा रही है. अच्छा, we're talking about the acceleration on the ball, not off the ball. हाँ एग्जैक्टली. Okay, got it. मैंने ऑफ द बॉल कंसिडर कर लिया. ऑफ द बॉल भी अगर देखोगे तो भी वही रहेगा ना, because it is decelerating, its velocity is decreasing, so acceleration will become negative अगर तुम बॉल का भी कंसिडर करो तो upwards डायरेक्शन में. so negative acceleration means कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है एक्सेलरेशन की. हम्म. ओके, आया सबको समझ में क्या हो रहा है इसमें? सी, फर्स्ट वी हैव द फर्स्ट सिचुएशन, द बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन नीचे है, सो वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स. डिस्प्लेसमेंट पहले यहाँ है, उसके बाद में यहाँ आ जाएगी बॉल, सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स. एंड एक्सेलरेशन इस पे जी एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज ऑल्सो डाउनवर्ड्स. जी तो हमेशा नीचे ही रहेगा. फिर जब ये बाउंस हुई उसके बाद में अब ये ऊपर जाएगी, सो वेलोसिटी विल बिकम अपवर्ड्स, displacement will also become upwards, but gravity will still be acting downwards. So only displacement and velocity are going to change their directions. आगे सबको समझ में? Yes. Okay. I'm giving you 2 minutes to solve this one. See, I'll tell you what's happening in the question. There are two different heights. And both of the balls are striking at the same time. Okay. And we have to find the difference in the heights. अब ट्राई करके देखो.
सी, हम दोनों सिचुएशंस कंसिडर करते हैं. सपोज दिस इज बॉल 1 एंड दिस इज बॉल 2. तो पहले जो ऊपर की हाइट पे पहले वो बॉल ड्रॉप हुई है. सो um, what equation are we going to use over here? S is equal to ut plus half at square. Okay, Th- that's right. Let's take this height as h. So our equation will be, and this is x. So x plus h equals to u is 0. So half at square. Now we have acceleration is g and time is given as 5. So x plus h equals to half g 25. G को 10 ले सकते हैं, so that will become 5 and this gives us 125. Now in the second situation we have h equals to half g and ये 2 seconds बाद रिलीज हो रहा है, so that means it is taking 3 seconds क्योंकि फर्स्ट को पूरे 5 सेकंड लगे हैं और ये 2 सेकंड बाद सेम टाइम पे पहुंच रहा है, जैसे 3 सेकंड्स लगे. That gives us 5 into 9, that is 45. तो h आ गया 45, x प्लस h है 125. तो x कितना हो जाएगा? 125 minus 45, that is 80 meters. So 80 is the answer. P. ये आ गया सबको समझ में? Yeah. Okay. So that's all for today, guys. Good night.